Before I start, किसी को भी at any point question है तो feel free to interrupt me, या फिर if you don't feel like interrupting me तो फिर chat में question लिख दो. I'll look at chat from time to time. Otherwise somebody will point it out अगर chat में question है. Alright, let's start. So टॉपिक आज का है सर्वलेस फंक्शंस, एंड सर्वलेस फंक्शंस एक सेपरेट टॉपिक है और लैम्डा फंक्शंस इज वन टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडब्ल्यूएस. हर क्लाउड प्रोवाइडर के पास उनके अपने सर्वलेस फंक्शंस है. फॉर एग्जांपल गूगल के पास गूगल क्लाउड फंक्शंस है, एज्योर के पास एज्योर फंक्शंस है, और एडब्ल्यूएस के पास एडब्ल्यूएस लैम्डा फंक्शंस है. बट द कॉन्सेप्ट इज सर्वलेस फंक्शंस. तो विल फर्स्ट सी कि सर्वलेस फंक्शंस होते क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, और हाउ टू यूज देम इन प्रैक्टिस. सेकेंड, हम लोग एक एक्सप्रेस जेएस बैकएंड एपीआई डिप्लॉय करेंगे ऑन एडब्ल्यूएस लैम्डा फंक्शंस. एंड देन थर्ड, हम कैशिंग और ग्लोबल वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करते हैं लैम्डा फंक्शंस में, व्हाट इज कोल्ड स्टार्ट, एंड बेसिकली हाउ टू ऑप्टिमाइज फॉर कोल्ड स्टार्ट इन लैम्डा फंक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. लेट मी गेट सम स्पेस हियर. देखो, सर्वलेस फंक्शंस में दो पार्ट है, सर्वलेस एंड फंक्शन. सो इट्स पार्ट थिंग. Let me draw a diagram here and let me write a function. मैं बस ऐसे ही सूडो कोड लिख रहा हूँ, don't worry about the code. Okay. So assume this is a function, or I'm talking about JavaScript here. Okay. It applies to any language. हर language में function तो होते ही हैं. At least object oriented language में तो होते हैं. तो take any language. I'm taking JavaScript for reference. एक function लिखा हुआ है which itself is complete. उस function को हम execute कर सकते हैं. So this is a function. Now let's talk about the serverless aspect of it. You can execute the function. अब function हमेशा एक server पे execute होगा. You always have a server. So what do we mean by the term serverless? Well, serverless term एक अपने आप में थोड़ी सी tricky है. When they say serverless, like cloud providers या कोई भी बोलता है कि हम लोग serverless use कर रहे हैं, they don't mean कि servers नहीं है. They mean कि server manage नहीं करने पड़ते. There are still servers जहाँ पे actually code execute हो रहा है. So servers are still there. It's just that you don't have to manage it. It's a managed service. And serverless function, the whole term is you can execute these functions on a managed platform where you don't have to manage servers. You only give them the function code and they execute the function for you. So ये part है serverless functions. किसी को समझ आया? नहीं, अभी तक नहीं समझ आया serverless functions part क्या चीज़ है? तो I can explain in with some other example. मतलब सिर्फ सर्वलेस फंक्शन, इस टर्म का मतलब किसी को है जिसको समझ नहीं आया? ओके, ऑल गुड. सो अब अजय, एक क्वेश्चन है, सर्वर मैनेजमेंट क्या होता है? सर्वर मैनेजमेंट, सो लेट्स से यू हैव अ फिजिकल सर्वर. एक मशीन है जिसमें 4 कोर एंड आई डोंट नो 16 GB रैम. ये एक मशीन है जिस पे यू आर रनिंग अ सर्वर. नाउ आई होप यू नो व्हाट अ सर्वर इज. सर्वर इज लाइक एपीआई सर्वर, एनी काइंड ऑफ सर्वर. उस मशीन पे यू हैव टू नाउ डू बंच ऑफ थिंग्स. फर्स्ट, इस मशीन को सबसे पहले स्पिन अप करना. यू हैव टू स्टार्ट द मशीन. देन यू हैव टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स. लेट्स से यू वांट टू रन अ नोड सर्वर. तो नोड सर्वर के पहले यू हैव टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मशीन. फिर आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन जाके आप सर्वर चला पाओगे. तो देयर इज द मैनेजमेंट पार्ट. यू हैव टू मैनेज द सर्वर. यू हैव टू डू अपडेटिंग, इंस्टॉलेशन, पैच, व्हाट इफ देयर इज अ सिक्योरिटी अपडेट एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि मैनेज करने होते हैं सर्वर को. वो मैनेजमेंट वाला पार्ट है. विद दिस सर्वरलेस फंक्शंस, बिकॉज यू डोंट मैनेज द सर्वर योरसेल्फ, तो इसलिए उसको सर्वरलेस बोल रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट पार्ट जो क्लाउड प्रोवाइडर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके लिए कर देते हैं. यू जस्ट नीड टू गिव देम द कोड एंड दे डू द मैनेजिंग. आई होप दैट्स क्लियर. अगर नहीं है तो लेट मी नो, आई कैन explain in other way. Cool. So नहीं, सही है, सही है. नहीं, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ. Actually, my doubt is that functions are being used everywhere, whether we are having serverless or whether we are managing the server by ourselves. So what is the basic difference between these serverless functions and the point where we are managing the server? Whole of the server management is being done by us. So, is there any difference? Yes, as I said, यहाँ पे what you need to do is just write a function in your preferred language
and give the function to AWS. I'm choosing AWS as an example. कोई भी service provider. Just you have to just give the code, nothing else. But जब server manage करना पड़ता है तो you have to tell कि server में कितनी कोर्स हैं, कितनी रैम है, सर्वर में क्या क्या सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, मतलब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्रीरिक्विजिट होता है, यू नीड ओएस, यू नीड फिजिकल कोर्स, मशीन्स एंड वट एवर यू नीड, वो सारा पार्ट you don't handle. Basically, if I have to talk in terms of stack, like let me see if I can explain in this way. There is physical, this, let's just call it machine, and then on top of that there's OS, and then there are softwares, and then you have your basically business logic code, I would say. Business logic code. Now if you are handling servers, then you have to do all these four by yourself. But if you are using a serverless service, then you only need to provide this much. ये तीनों चीजें cloud provider handle for you. Okay. Cool. Yep. So yeah, this serverless function is basically your business logic. Whatever you want to achieve, you just tell them that much and they handle these three things for you. So that's the advantage here, and that's the basic difference. All right, so let me remove this. Now मैंने बता दिया serverless term क्या है, functions term क्या है, combinedly serverless functions क्या है. So you have these functions, you can write your logic here, give to a provider, they'll execute to you. Now when do they execute this for you? You have to tell them. Basically input क्या होता है इसमें. Now these functions are basically executed based on events. एक event is basically, I hope you understand the term event, like at the core what it means. A event is just an event that happens in the function. Now किस किस के type के event होते हैं? I'll just give you an example. For example, अगर किसी ने एक HTTP request करी, so let me write these examples. HTTP API. HTTP, कोई भी HTTP call that you make to a API, that the HTTP call that you make to a API is an event. It can be considered as an event. Now let's say database. अब database में you can either insert or update or delete or query, basically read. ये इन सबको भी you can consider as events. If it's a read event or a write event, or maybe some table has changed or something like that has done, that is also considered as an event. Now I'll talk about how you can use them or how they are used, but मैं भी events के example दे रहा हूँ. Then another event example could be, if you know the term SQS, basically simple queue service, जो AWS की SQS service होती है, और it's just basically a queue जहाँ पे you can push, or some sort of service can push a message to the queue, and then some sort of service can take the message out of the queue and process it. तो SQS में भी when you push a message or when you take a message out of the SQS, ये सब भी events होते हैं. तो these are also examples of events. Let's also take another example, S3. Now S3, I hope अगर किसी ने नहीं सुना तो S3 is basically a object level store, जहाँ पे AWS की सर्विस है, जहाँ पे you can store basically some data, and वहाँ पे buckets में if you put some object, you remove some object, और you can update some object or read some object, ये सब भी kind of events हैं. तो ये सारे events के बेसिस पे हम फंक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं. आई विल कॉल दिस ट्रिगर्ड बेस्ड ऑन इवेंट्स. सो फंक्शन इज ट्रिगर्ड बेस्ड ऑन इवेंट्स, और इवेंट्स के मैंने एग्जांपल यहाँ पे समझा दिए क्या क्या इवेंट के एग्जांपल हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस फर्स्ट एग्जांपल है फॉर सिंप्लिसिटी. लेट्स से एक एपीआई कॉल आई, एंड ये सर्वरलेस एग्जांपल, लेट्स अज्यूम दिस इज अ एपीआई, लाइक एपीआई का बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है इसमें, दैट whenever there is a call to, let's say, get call to /hello, then you return this response, a b json. Whenever there is a call to this, you return this. let's say ये लॉजिक लिखा हुआ है. तो जब भी फंक्शन, जब भी सिस्टम में एक गेट रिक्वेस्ट आएगी, यानी एक HTTP इवेंट होगा, तो दिस फंक्शन विल गेट दैट इवेंट एज एन आर्ग्यूमेंट event. Let me extend this, and then it will do the processing, जो कि business logic यहाँ पे लिखा हुआ है, and at the end it will return
basically this much. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, it varies on what the event is, but for example for HTTP event it could look something like this. हम एक कोड में भी देखेंगे, it kind of looks like this only, and then फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, फंक्शन को इवेंट मिलेगा, फंक्शन विल डू सम प्रोसेसिंग, कंप्यूट द आउटपुट एंड देन फिनिश. फंक्शन स्टार्ट हुआ और फिनिश हो गया, दैट्स इट. फंक्शन की इन्वोकेशन खत्म हो गई, एंड व्हाट यू गेट आउट ऑफ द सिस्टम, आउटपुट. एंड आउटपुट में मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, आई टेल यू व्हाई. बट ऑन अ हायर लेवल this is how the execution starts. So function execution is triggered by an event, and function will do some business logic and calculate some output. Output may or may not calculate. For example, output अगर for example HTTP event है, so you always have to respond to your user, right? So that's why you have output in that case. But if you have some sort of background processing, for example तुम्हें किसी को email भेजनी है, then you don't have a output, you just send the email but you don't return some output to some user or something like that. You just do your thing and finish. So output basically question mark है, it may or may not give output out of the system, but ये processing जरूर करेगा. So question mark आई होप सबको समझ आया होगा. And HTTP से एग्जाम्पल से मैंने बता दिया कि how these functions are executed. So let me actually write this. Invoked, let me write this stages first. Event comes into system, function is invoked, function do processing, function exits after processing, and then you have output पे I'll put question mark. So इतना पार्ट में किसी को कोई भी क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन? सबको क्लियर है? ओके. सो नाउ यू सी, यहाँ पे हमने किसी भी पॉइंट पे कोई भी सर्वर मैनेज नहीं किया. इवेंट आया बाहर से, हमने फंक्शन का बिजनेस लॉजिक लिखा, ये 3 चीज़ें की, बेसिकली ये चीज़ें हैंडल की और आउटपुट निकाल लिया. हमने किसी भी पॉइंट पे कोई भी सर्वर मैनेज नहीं किया, सिर्फ बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट किया. सो दैट्स द term or power of serverless functions. You don't have to handle servers. That's why it's called serverless functions. Let me take some more space. Let's also talk about actually I think that's sufficient ki on a higher level ki what are serverless function and how you use them. Let's actually write a function, maybe उससे और ज़्यादा clarity आएगी. एक चीज अजय तू बात कर सकता है इस चीज का कि हाँ जैसे अगर फंक्शन रनिंग नहीं है तो उसका कोई रिसोर्स नहीं रिक्वायर्ड एंड ऑल लाइक Yeah, sure. Let's talk about maybe pricing point से क्या होता है. So and how it differs from a server. So I'll talk about server first क्योंकि उससे हम कंपेयर कर रहे हैं. तो एक सर्वर क्या होता है कि सर्वर इज रन मोर और लेस 24/7, राइट? रन 24/7. अगर एक आपका मशीन है वो जनरली 24/7 चलती है, और जब तक वो चलती है बेसिकली आवर्स, उसके हिसाब से यू आर प्राइस्ड फॉर दैट, फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम योर सर्वर इज अप. बट फंक्शंस ऑन द अदर हैंड, और बाय फंक्शन प्लीज अंडरस्टैंड, मैं दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ. सर्वलेस फंक्शन और फंक्शन एक ही चीज़ है. मतलब यहाँ पे फंक्शंस पे यू आर ओनली बिल्ड, लाइक लेट मी राइट, बिल्ड फॉर इन्वोकेशन टाइम. फॉर एग्जाम्पल अगर ये सर्वर फंक्शन का इन्वोकेशन में लेट्स से इट्स वेरी सिंपल लॉजिक कि इवेंट आया और हमने रिस्पॉन्ड कर लिया. फॉर एग्जांपल दिस, इसके लिए हार्डली कितना लगता है? आई डोंट थिंक इट विल टेक इवन हार्डली मोर देन 20 मिलीसेकेंड. सो फॉर एग्जांपल अगर इसको सिर्फ 20 मिलीसेकेंड लगे, देन यू आर ओनली चार्ज्ड और बिल्ड फॉर 20 मिलीसेकेंड्स. उसके बाद अगर लेट्स से फॉर नेक्स्ट 1 आवर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई सिस्टम में, यू आर नॉट बिल्ड फॉर दैट बिकॉज फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू हैड अ सर्वर, तो चाहे 1 घंटे तक रिक्वेस्ट ना भी आए, सर्वर तो चला है, राइट? तो यू विल बी बिल्ड फॉर दैट. तो दैट्स द बेसिक प्राइसिंग डिफरेंस बिटवीन दीज टू. एंड यहाँ पे इन्वोकेशन टाइम पे के बेसिस पे बिलिंग होती है. आई कैन ऑल्सो शो यू AWS के पेज पे AWS लैम्डा फंक्शन.
If you just search this, go to this first link and go to pricing. You can read more about Lambda in free time if you want. Feel free to. But let's see the pricing here, and you will see. ऊपर में था वाले थे ऊपर में. Yep, it's just up there. Yep. So ये जो आर्किटेक्चर है बेसिकली इंटरनल जो मशीन है कि जिस मशीन पे फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट. दिस इज हाउ यू सी इट. फॉर इट इज कैलकुलेटेड इन GB सेकेंड्स. सो हर मशीन में सॉरी फॉर हर फंक्शन को यू हैव टू डिफाइन टू थिंग्स. बेसिकली हाउ मच memory your function will need. You can put a limit on that. For example, if I say कि मेरे function को won't require let's say more than 1 GB. एक function के लिए 1 GB memory more than sufficient होता है unless you are doing some heavy processing. So let's say I say 1 GB. So 1 GB RAM अगर इस function को allocate हुई है and if it is used for 1 second, basically function invocation instead of 20 millisecond, it takes 1 second, then that's how you are charged. This much dollar for every GB second. This is how you charge it. And ये ड्यूरेशन के बेसिस पे और ये रिक्वेस्ट के बेसिस पे यू आर चार्ज $0.2 पर 1 मिलियन रिक्वेस्ट. अगर जैसे ये जो गेट रिक्वेस्ट है राइट, इस फंक्शन पर अगर ऐसे 10 लाख रिक्वेस्ट आ जाए, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड 10 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है. 1 लाख इज 10 lakhs. Sorry, 1 million is 10 lakhs. So 10 lakhs request जब आएंगी, then you have to pay $0.2, which is I don't know, that's hardly कितना होता है 20, I don't know, something like very very cheap, very, in 20 to 25 rupees or something like that, I don't know, but बहुत cheap होता है. So for 10 lakh requests, so that's why it's very cost effective. And let me also talk about a third advantage here. If you have a server, then server को scaling करना is a different like बहुत थोड़ा हैसल प्रोसेस होता है, मतलब इतना इजी नहीं होता. बट यू हैव दिस फंक्शंस एंड एक फंक्शन को लाइक कितना लाइट वेट है फंक्शन, यू कैन ऑलरेडी इमेजिन इफ अ फंक्शन कोड इटसेल्फ इज आई डोंट नो लेट्स से 10 MB, कंजर्वेटिव एस्टिमेट मान लेते हैं 10 MB, एंड 10 MB का एक फंक्शन है, देन यू कैन वेरी इजीली पिन अप 200 of these servers or hundreds of these or thousands of these functions. Thousands of functions. I'll write this. Spin up 1,000 of functions in very less amount of time, because it just this much code जो कि servers पे execute कराना होता है. तो AWS has lots of servers. They just take your code, distribute it across its servers, and basically you have scaled up. Because अब बहुत ज़्यादा functions है तो you can take up lots of requests. And this very advantage makes it ideal for spike kinds of loads. For example, we very recently we took a session on Hotstar also, right? So let me take that example. Hotstar में क्या होता था ना कि if these are basically if this time and these are users, then Hotstar में क्या होता था कि let's say मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, एंड कोई बहुत अच्छा प्लेयर खेल रहा है या फिर बहुत मतलब इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया, और हॉटस्टार ने सबको नोटिफिकेशन भेज दिया कि हे लेट्स से धोनी 6 मार रहा है, तो बहुत सारे लोग एकदम से प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं. तो अगर लेट्स से प्लेटफॉर्म हैज दीज मेनी यूजर्स राइट नाउ, एकदम से विद इन सेकेंड्स और मिनट्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं. तो to handle these kind of spike loads, function is very ideal for that. I'm not saying Hotstar use serverless function or not, I'm not sure, but I'm saying like this is a ideal use case for function. अगर आपका load बहुत ज़्यादा ऐसा है कि let's say I'll take another example. Let's say you operate in India and आप कुछ ऐसा बिजनेस करते हो जो जनरल लेट्स से स्टॉक मार्केट ओनली, लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, जो 9 बजे खुलती है आई थिंक और 3 बजे बंद हो जाती है. तो 9 to 3 में आपका लोड होता है इतना लेट्स से सिस्टम में, एंड पोस्ट 3 बिकॉज मार्केट बंद हो जाती है तो लोड लेट्स से यहाँ ड्रॉप कर जाता है. तो ये भी फंक्शंस के लिए बहुत आइडियल है, बिकॉज इतने टाइम में you can just spin up lots of functions and you use them function to serve the load. and उसके बाद because अब load कम हो गया तो server functions भी कम execute हो रहे हैं, and because we have talked you are only built for invocation time.
अगर आपके फंक्शन इन्वोक नहीं हो रहे देन आपका बिल भी नहीं बन रहा. बट ऑन द अदर हैंड अगर सर्वर होते तो यू हैव टू एक्चुअली शट डाउन सर्वर्स ऑन योर ओन. इफ यू डोंट देन यू विल बी बिल्ड फॉर दैट. आपको उसकी कॉस्ट आएगी. सो ये इस टाइप के स्पाइक लोड्स है ना, ये सर्वरलेस फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द यूज केसेस जिसके लिए सर्वरलेस फंक्शंस बनाए गए थे. सो एक एग्जांपल हो सकता है कि लाइक आप लोग वैसे वेबसाइट ये सब पे जाते होंगे जिसमें लाइक यूटिलिटी वेबसाइट होते हैं ना, जैसे लाइक हमें कुछ इमेज को कन्वर्ट करना है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, या किसी तरीके का डेटा प्रोसेसिंग करना है छोटा सा एकदम, जस्ट यूटिलिटी वेबसाइट्स. तो उन सब में ऐसा सर्वरलेस फंक्शंस का यूज़ किया जाता है ताकि जस्ट वो रन करे, आउटपुट दे दे एंड दैट्स इट. फिर वहाँ पे कोई बैकएंड रन नहीं कर रहा हो. Yep, that's also a good example. तो all over concept क्या है कि if you are not sure about your user load and you only want कि सिर्फ उतना ही कॉस्ट आए मुझे जितने टाइम के लिए मुझे प्रोसेसिंग करनी है, then go for serverless function. It's very good for you. Before I move on to example and let's dive into code now. बहुत आ गया chit chat. तो इससे पहले किसी को भी कोई भी क्वेश्चन या फिर किसी को कुछ समझ नहीं आया अभी तक? All good. Let me also check chat. Chat में कुछ नहीं है. Right, I didn't see anything. एक क्वेश्चन है बैकएंड एज अ सर्विस वर्सेस इसके फंक्शन एज अ सर्विस जो हम लोग बात कर रहे हैं. तो आई गेस इसको बाद में भी क्लियर कर सकते हैं. हाँ श्योर, एब्सोल्युटली. लेट मी राइट इट डाउन हियर ताकि इसको एंड में एड्रेस कर सकें. तो बैकएंड एज अ सर्विस एंड फंक्शन एज अ सर्विस. बैकएंड एज अ सर्विस इज आई वुड से AWS के टर्म में बोलो तो बीनस्टॉक कुड बी वन, और अगर GCP के टर्म्स में बोलो तो क्लाउड रन, जस्ट क्लाउड रन. एंड फंक्शन एज अ सर्विस तो व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, लैम्डा ही होता है. सो let's talk about these at the end of the session, but that's a good question. So let's go into an example. Let's see an example. सबसे पहले you need to go to AWS console. I'm using AWS here. Or if you don't have account, तो let me open in Cognito AWS console. सर्च फॉर इट. AWS में फ्री टियर मिलता है और फ्री टियर में यू कैन प्रीटी मच डू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स यू वांट. कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कॉस्ट नहीं आएगी सच. सो गो टू दिस, क्रिएट AWS अकाउंट एंड जस्ट फिल इन योर डिटेल्स. एक शायद डेबिट कार्ड दे लास्ट यू डेबिट कार्ड, उसमें शायद ₹1 या ₹2 दिल चार्ज एंड they'll refund you of course, just to verify that you are basically you are not a robot, you are a valid user and you can create an account for you. Once you create an account for you, then you open console. तो ऐसा कुछ console दिखेगा. I'm showing you this view. I'm not showing you the sign up process. You can do it later, but it's very simple. So after you sign up, you will be seen here. अभी I use lot of service, तो मेरे recently visited में ये सारी services लिखी हुई हैं. But if you open it, you will not see nothing here. So go to the search bar and you can look for Lambda here. Just write Lambda and you will see Lambda here. Now we will create a Lambda function. You see ये जो तीन function है, we use these functions for our backend task, for our dev11.in website, but we'll create a new function. So just click on that new create function. Let's author from scratch and then just write a name for a function. I will say, let's say hello, or let's say tutorial. And you don't need to select anything else. Is sufficient. Just create the function. Now I'm going to map it whatever we will be doing it back to here. So अभी हम एक function बना रहे हैं so far, and इसने एक sample source code लिख दिया है यहाँ पे, which they give like by default वो देते हैं, but we'll be changing it of course. But you can see यहाँ पे एक function लिखा हुआ है export. I hope सब जिसको Java से समझ नहीं आती, just to explain to you, this is a function and ये पैरामीटर है इवेंट. दिस इज द इवेंट दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. ये इवेंट यहाँ से आता है. इट कुड बी HTTP इवेंट, कुड बी डेटाबेस इवेंट, SQS इवेंट, S3 इवेंट, एनी काइंड ऑफ इवेंट, बट जनरली एक इवेंट आएगा यहाँ पे सिस्टम जूम में. इन करना है, ये बहुत छोटा फॉन्ट है. श्योर थैंक्स. बेटर. हाँ सो थोड़ा दिस ठीक है. okay, so this is the event, then this is the business logic that you do and then you return a response. Let me actually simplify it even further. Let's say I will calculate a random number here, number plus to math
not random, not so, and then I will print this. मैं आउटपुट में भेज दूंगा. Cool. Once you change this code, just click on deploy. यहाँ पे you can see the batch change is not deployed, so just click on deploy and it will update the function code. All good. So far you have this function, you have seen this function code and you can see थोड़ी similarity आ रही होगी. You write the business logic and then you return. Now अब तक हमने function लिख लिया. Now we need to define the triggers कि ये function में ये event कहाँ से आएगा. तो for that as I said हमारे पास multiple types of events है. But I will be showing you HTTP API event. Now, how to do that? There's a concept called API gateway in AWS. API gateway, you can define basically a API, and then API will receive the request from the user and forward that request event to Lambda. वो हमें achieve करना है. तो सबसे पहले just again back to console, look for, or you can search from here also. That's fine. API gateway. Open it, another tab. अब API gate में I will create a API. You can just select HTTP API. There are different kinds of API gateway here, like WebSocket. अगर किसी को two-way communication चाहिए होता है, or these kind of APIs are there. But I'll just go with HTTP API, for example, and just give it a name, and I will call it API because that's relevant. जो हम बना रहे हैं, it is a API gateway. So, but you can give any name you want. Then just click on next. Don't need to select anything else. So API gateway has been built. अब हमें let me go back here. I have this API gateway. Sorry, you understand this? यहाँ पे आ जा रहा है. But I have this API gateway here. I want to link it to my serverless function. For example, जब भी API gateway को एक request आए user से, I want it to send the request or send the event to Lambda function so that Lambda function can handle it. So उसके लिए क्या करना है? Go to routes. You can do it from Lambda also. Let me show you Lambda से कैसे करना है. Let me zoom out a bit. Or let me zoom in. So Lambda में just go to, you can see यहाँ पे code है. So यहाँ पे जब code manage कर रहे हैं वो है. There is a test if you want to test your function, but हम लोग test भी करेंगे. Then there is a monitor tab if you want to see the logs, which we will see in a second. Go to configuration. Configuration में you have bunch of options. Let me explain you the options first. There is a general configuration. जैसे मैंने बताया था ना कि you can select और basically define कि मुझे अपने function को कितनी memory देनी है होती है. Well, more or less you can just put an estimate क्योंकि sorry, okay. इस पेज में अब सही है? हाँ. Thanks. So you can define these limits कि मुझे 128 MB memory देनी है. अगर function इससे ज़्यादा use कर रहा है, it will not allow the function to use that. It will throw a memory exception and terminate your function. Similarly, you can also put a timer कि अगर मेरा function, because अब functions का क्या है ना, they are you get billed for invocation time. So you should always put a limit on this. What if फंक्शन एक इन्फिनिट लूप में फंस गया या फिर बहुत हैवी कंपटीशन कर रहा है, इट टेक्स मोर देन अ मिनट और सो, एंड इमेजिन बहुत सारे फंक्शन हिटिंग इनटू दैट इन्फिनिट लूप, तो यू विल बी योर बिल कॉस्ट विल इंक्रीज. सो ऑलवेज पुट अ सेफ लिमिट कि अगर फंक्शन मोर और लेस लेट्स से 3 सेकंड में एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, उसके बाद just terminate the function. So that's the timeout limit here, and that's the memory limit here. You can, if you want, you can just edit it. I don't want to edit it, so I'll just leave it. Then trigger. Now trigger is basically these triggers जो मैं बता रहा था. Now we will add a trigger here. Now there are a bunch of triggers. API gateway. I'll show you DynamoDB. ये जो database events we talked about, right? So AWS में service होते हैं DynamoDB. You can put that as a trigger. You can put S3 as a trigger, SQS as a trigger, MQ is messaging queue, and then SNS is simple notification service. These kind of services you have. I will pick API gateway because मुझे HTTP trigger set करना है इसमें. I will use an existing API and the one I created API, and don't need to select anything except security. Do you want anybody to make a request to your API? Then select open. If you want कि सिर्फ authenticated logo using a JW2 token, then select that. But I will select open because ये logic मैं API function के अंदर handle करूँगा rather than at the API level. So
sorry, just select default. Now ये trigger मैंने सेट कर दिया. Now you will see this link API endpoint / tutorial. Now ये API endpoint basically हमारे API gateway का endpoint है. I can show you. So let me go to API. You see ये वाला endpoint यही है M5 and / tutorial. Basically if anybody go to this link / tutorial, the request will be sent to, or the event will be sent to this function, and function will actually handle the request. So expected kya hai? If I go to this / tutorial, then I should expect this string in return, hello from lambda and a random number. So let's test it. What was the name again? Tutorial. So you will see hello from lambda. Let me zoom in. Hello from lambda and a random number. So हुआ क्या कि सिस्टम में एक बिकॉज हमने ट्रिगर सेट कर दिया, तो हमने इन दोनों का अटैच कर लिया बेसिकली. अब जैसे ही एक सिस्टम में HTTP इवेंट आया, API गेटवे ने उसको सर्वरलेस फंक्शन को दिया. फंक्शन गॉट द इवेंट, इसने आउटपुट कैलकुलेट किया, इट सेंट द रिस्पॉन्स एंड वी सी द रिस्पॉन्स बैक हियर. इतने पार्ट में किसी को कोई भी क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन, या फिर कोई है जो इस दोनों पार्ट को अभी तक मिला नहीं पा रहा, और he or she is not able to fit the pieces together कि ये कैसे काम कर रहा है. Okay, all good. So let's talk about logs. Let's say I console log here. In fact, before even logs, इसका लोकल डेवलपमेंट सेटअप्स करते हैं. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक कोड एडिटर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट हाँ, या most of the time you will not be developing your code from here, right? You will be developing your code from a ID, or your code will be hosted on some GitHub or something like that. So we want to develop there but host our function here. तो हम एक local environment setup कर लेते हैं. So I will go to my VS Code. VS Code visible है? Let me zoom in. हाँ, विजिबल है. ओके. सो मैंने यहाँ पे दो फोल्डर बना रखे हैं. लैम्डा, जिसमें हम एक लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, एंड देन सेकंड पार्ट में जहाँ हम एक एक्सप्रेस एपीआई बनाएंगे, विद दैट कोड वी विल बी राइटिंग हियर. सो लेट्स ओपन अ टर्मिनल इन लैम्डा. आई विल डू npm init ताकि एक पैकेज फाइल बन जाए. एंटर एंटर एंटर, नथिंग. एंड देन आई विल क्रिएट अ सोर्स फोल्डर एंड देन इंडेक्स फोल्डर. Now index folder के अंदर I can just copy paste this code, doesn't matter. Now I have the code on my local PC. अब मैं यहाँ से develop कर सकता हूँ. So first I will change something here and then I'll show you कि यहाँ से मैं वापस lambda पे अपना code deploy कैसे करूँगा. So let's say I will change it. I'll just change this much. Hello from lambda local, nothing else. इतना part change करते हैं and then yeah. In fact, yeah, let's just do this much as a starter. So to do that, now there are bunch of ways to push this code to lambda, but मैं आपको for sake of this tutorial मैं बहुत simple तरीका यूज करने वाला हूँ. What we'll do is we will zip this code and then we will upload that zip file on AWS Lambda. Like, let me go to Lambda. You can see you can upload your code from either a zip, or you can upload your code to S3 first, and from S3 you can take that here, but I will pick a zip for sake of simplicity. So what I will do is I will write a automation script here. That I'll call it package, or not package, let's call it deploy, which will zip these files for me automatically. जैसे मैं स्क्रिप्ट को रन करूँगा, it will zip the code for me, give me the zip, and I can go and upload the zip. इस बहुत सिंपल होगी ये स्क्रिप्ट, and I'll explain it मैं क्या लिख रहा हूँ. सबसे पहले I'll just do this zip -rq. R is for recursive, Q is for quiet. You don't need to care about these flags if you don't want to. And then I will create a package.zip file, and उसके अंदर मुझे source को package करना है. This source I'll take and I'll package it. Then let me also print the size of the zipped file, ताकि मैं दिखा सकूँ कि कितना size बनता है function का. और yeah. Let me run the script. Now you will see it's
like it's upper bound, this is upper bound 1 MB, it's hardly a few KBs, we will see exact kitna size hai, but upper bound is 1 MB, so that's cool. Now हमें एक package.zip file मिल गई, let's go and upload that code from here. Let me select it. So I go to Lambda, I pick package.zip, open. So this is hardly 456 byte, not even KB, it's byte. So function size is very small. And then I save it. अब यहाँ पे दिखाएगा updating the function code. Give it a few seconds. Now it has updated, and now let's go to that link and try to refresh. Let me close these tabs. It will most likely throw an error. Yes. So you will see message internal server error. Why did that happen? Because if you just scroll down on this same screen, you will see runtime settings. So हुआ क्या कि पहले ये इंडेक्स फाइल ना बिल्कुल टॉप पे थी, like inside tutorial it was right here. So you need to tell कि function का entry point क्या है. For example, as in कि ये जो function लिखा हुआ है right, ये कहाँ पे exist करता है, what is the entry point in the system, so that it can pick the function and pass the event. Previously it was index.handler. The handler is just this much. Yeah, this is index file and index.handler. This is the export. अभी ये ऐसे था बाहर का इंडेक्स, बट हमने इसको src फोल्डर के अंदर मूव कर दिया. So we just need to update this piece here. Instead of index.handler, it should be source/index.handler. That's it. So just save it, and it has updated the function code. And if I try to refresh, it should work. So you see hello from Lambda, local, and then here. Now अब क्या करना है, बस just keep on developing here whatever you want to do, package it, come here, deploy it, upload it, that's it, done. Function update हो गया. That's how you update your function. So I hope इतना part clear होगा. Now let's increase the complexity by one. Also अगर मैं इसको बार बार zip करूँगा, it will create a same folder. So before zipping, I will see if the file already exists. I will remove it. Package.zip. If package.zip already exists, it will first remove it and then try to zip again, ताकि latest code आए zip में. तो इसको हटा देते हैं. Now let's say मुझे यहाँ पे एक external library. This is अब so far this is like native. कुछ भी external package use नहीं हुआ है. But now I want to, let's say, use some external package. I know this package called random. So let's try that. अब मैं सिर्फ random package का use example ले रहा हूँ, but it applies for any kind of package. जब भी आप external package use कर रहे हो, तो there is this one extra step you need to do. I will try to import it. Random require random, and I think the way you use it is random.int, and इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं using random package, and इसमें एक package script लिख देते हैं start, so that I can show you कि locally how to work with it. Node source index. तो अगर इसको मैं locally execute करूँगा इस function को, let me console log it. It threw an error. Let me see. Handler is not defined. Oh, actually it should be like this. Const handler and then module exports equals to handler. Yep. So you see status and then hello from this, and then इसने actually एक random integer generate कर दिया यहाँ पे. So at least this is working locally. Now इस बस console log हटा देते हैं, बाकी part रहने देते हैं. If I try to package it and then deploy it, अब मैंने पैकेज कर दिया, अब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे सोर्स कोड अपलोड कर सकूँ, अपडेट कर सकूँ. सो मैंने अपडेट कर दिया. यू सी साइज़ भी बढ़ गया क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी, थोड़ा एक्स्ट्रा कोड लिख दिया, तो साइज़ थोड़ा बढ़ गया. सेव इट. सो यू कैन फाइंड द कोड हियर, बट इफ़ आई ट्राई टू रिफ्रेश इट, बेसिकली जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इट विल मोस्ट लाइकली थ्रो एन एरर. यू सी इंटरनल सर्वर एरर. नाउ कैसे देखना है कि क्या दिक्कत हुई? दैट ब्रिंग्स अस टू लॉग्स. कैसे फंक्शन के लॉग्स देखने हैं, जहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उसके लॉग्स कैसे करने हैं. तो आई टोल्ड यू राइट, गो टू देयर इज अ मॉनिटर टैब हियर. सो इफ यू क्लिक ऑन मॉनिटर,
click on this view logs in CloudWatch. So CloudWatch एक AWS की सर्विस है जहाँ पे जहाँ जो भी फंक्शन के लॉग्स है वो वहाँ स्टोर होते हैं. So if you just click on it, वो डायरेक्टली एक डायरेक्ट लिंक है that will point to the place where logs for this particular Lambda function is stored. So if I let it load, you'll see AWS/Lambda/tutorial. So that's the name. एंड यहाँ क्लाउड वॉच में क्या होता है ना, लॉग्स को ग्रुप कर देते हैं इन अ स्ट्रीम. सो अगर बहुत जल्दी जल्दी लॉग्स आ रहे हैं तो क्लाउड वॉच लाइक काइंड ऑफ बैच देम इन वन स्ट्रीम एंड वो स्ट्रीम होता है. सो यू हैव जस्ट ओपन अप द लेटेस्ट स्ट्रीम जो यहाँ पे टॉप पे हो एंड दैट विल शो यू द एक्चुअल लॉग्स. सो एंड देयर यू कैन सी द एरर. सो एरर क्या है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल रैंडम. सो हुआ क्या कि इफ आई गो बैक टू कोड, हमने रिक्वायर करने की कोशिश की बट इट कोड नॉट फाइंड द मॉड्यूल बिकॉज देयर इज नो नोड. यू कैन सी देयर इज नो नोड मॉड्यूल्स हियर. यहाँ पे कोई नोड मॉड्यूल्स नहीं है. दैट एग्जिस्टेड लोकली बिकॉज हमने लोकली इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे तो थी, तो रैंडम पैकेज नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिल गया था बट लैम्डा फंक्शंस पे नहीं है. सो व्हाट द चेंज वी नीड टू डू इज, जब हम सोर्स को पैकेज कर रहे हैं राइट, सोर्स के साथ साथ नोड मॉड्यूल्स को भी पैकेज कर दो. दैट्स द ओनली चेंज. सो जस्ट डू दिस मच, क्रिएट योर फंक्शन अगेन एंड यू विल नोटिस कि फंक्शन का साइज भी बढ़ गया होगा क्योंकि अब आपने नोड मॉड्यूल्स भी जिप कर दिए साथ में. सो इफ आई अपलोड इट, यू सी इट हैज़ बिकम 207 KB. सो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया. नोड मॉड्यूल्स ही बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्पेस लेती हैं फंक्शन में. सो लेट्स से सेव इट एंड यू विल सी द नोड मॉड्यूल्स अब यहाँ पे हैं. एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट नाउ, इट शुड work. So you'll see hello from Lambda using random package and this is the integer. If I try to refresh, ये random integer ये 0-1 के बीच में कर रहा है because I think by default it takes 0-1 but I think I can pass something like 0 to 100, वो भी काम करेगा. But cool, but I hope you get the intent कि हमें source code को package करना है, basically the business logic that you have along with the dependency जो node modules में होता है. Those are the two folders that you will need to package and that's it. Just package this much, upload to Lambda and Lambda will execute and do the job for you. So that covers logs and how to do local development from Lambda and push this code into production on AWS. इतने पार्ट में किसी को डाउट, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू हाउ टू डेवलप अ एक्सप्रेस एपीआई. हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस इस बिजनेस लॉजिक की बजाय एक एक्सप्रेस एपीआई होगी. दैट विल बी द ओनली चेंज. सो आई विल स्टॉप हियर टू सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस. लेट मी चेक चैट. नहीं ऐसा कुछ नहीं. ओके, ऑल गुड. लेट्स मूव ऑन. ऑलराइट, नाउ लैम्डा फंक्शन में यू नो व्हाट, आई विल कॉपी दिस मच क्योंकि मैंने बताया था ये पार्ट सेम ही रहना है, तो आई जस्ट कॉपी दिस मच. डिप्लॉय स्क्रिप्ट सेम रहेगी. सोर्स कोड के अंदर फर्स्ट आई विल एक्चुअली इंस्टॉल एक्सप्रेस हियर. इट्स डन. सो लेट्स राइट एक्सप्रेस की एपीआईज. तो बहुत सिंपल एपीआईज लिखेंगे हम लोग. सबसे पहले एक्सप्रेस इंपोर्ट करो, देन क्रिएट अ एक्सप्रेस ऐप. Oops. And then export the app. अब ऐप के अंदर I will use a sorry request response and then अब ये generic handler है, so I'll say let's start send actually status 44 not status, sorry, send route not found and let's also create some routes. अब जो एक्सप्रेस से जिसने एक्सप्रेस के साथ काम किया हो उसको ये सब फेमिलियर लग रहा होगा कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. index.js and then let's also create a hello. Let me copy this much. अब hello के अंदर we will create a router. We will be exporting this router and then router. अब hello is basically this file handle all the routes that comes after /API/hello and then slash. अब slash वाले पार्ट जितने भी हैं वो लॉजिक यहाँ पे लिखा होगा. So I'll write let's say get and then I will say world address
request response, you can just dot send hello world, and let me also write another one. So what this is slash hello world, and what this is world 2. Let's say world 2. So, all right, let's do that. Slash id, let's take that, and hello stock brown stock. I think this is the way to do it. You remove this, actually we know this. So this will be anything हम यार लिखेंगे वो बेसिकली वापस आ जाएगा रिस्पॉन्स में. नाउ I'll also create the basically the base router. So let me copy this much. I will call it API, or you can call it API routes if you want. अब API routes के अंदर I'll take, or if let's say अभी मेरे पास सिर्फ hello है, you can have multiple routes here. User, it depends on what your actual app is about. For example, if it's GitHub, then you can have a PR, repository and whatever types of routes you have, वो सब यहाँ define हो गए. And index के अंदर we will combine all of them in under one router, and we will export that one router. अब मैं ये नॉर्मल एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. यू कैन बेंड दिस कॉन्सेप्ट्स एनी वे यू फील कंफर्टेबल. जैसे भी आप एक्सप्रेस का कोड लिखते हो, जस्ट कीप ऑन राइटिंग दैट वे. मैं बस ऐसे ही एक कन्वेंशन दिखा रहा हूँ, बट दिस इज़ नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट कोड. कैसे भी कर सकते हो. पेयर आउट डॉट यूज. तो जैसे ही हेलो आता है, आई वॉन्ट इट टू यूज द राउटर फ्रॉम hello router require. आई वॉन्ट इट टू यूज दिस राउटर. तो जैसे ही हेलो स्लैश हेलो होगा, और उसके बाद जितना भी होगा वो हेलो राउटर हैंडल करेगा. तो दिस मच इज हैंडल्ड हियर, एंड वट एवर कम्स आफ्टर इज हैंडल्ड इन hello डॉट JS. ऐसे यू कैन राइट मल्टीपल राउट्स. सो लेट्स से मैंने इतना डिफाइन कर लिया, एंड आई एक्सपोर्टेड दिस. इनफैक्ट आई कैन डू डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, दैट्स फाइन. एंड हियर आई विल डू ऐप डॉट यूज. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना स्लैश हेलो के बाद जो भी आए वो हेलो राउटर यूज़ करेगा, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लैश API के बाद जो भी होगा वो API राउट्स यूज़ करेंगे. API राउट्स मैंने इंपोर्ट कर लिया. सो इतना पार्ट इसने हैंडल किया. उसके बाद जो होगा वो यहाँ लिखा हुआ, और उसके बाद जो फर्दर नेस्टिंग है, सो दिस इज नेस्टिंग ओनली, उसके बाद वो यहाँ लिखा हुआ है. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो हमने API राउट्स डिफाइन कर लिए. एक्सप्रेस, नॉर्मल एक्सप्रेस. सो दिस इज़ अ नॉर्मल एक्सप्रेस ऐप. सो फार जिसको एक्सप्रेस समझ आती है उसको इतने पार्ट से वो फेमिलियर होगा कि बेसिकली व्हाट इज़ रिटर्न हियर. नाउ जस्ट वन मोर टू थिंग टू डू. जो यू मस्ट बी डूइंग ऐप डॉट लिसन, जिसके बाद ऐप स्टार्ट होता है. सो उसके लिए वी विल क्रिएट 2 फोल्डर्स हियर, आई मीन सॉरी फाइल्स. वन इज सर्वर डॉट JS, जिसके अंदर लेट मी राइट दैट, लेट मी इम्पोर्ट ऐप. Actually, instead of index, let's call it app. It makes more sense because इसके अंदर app लिखा हुआ है. And then you can do app dot listen. मैं 8080 पे start listen करता हूँ, तो I'll just use that. And then console dot log server listening. ठीक है. Now this much I hope you all understand. कोई है जिसको इतने में किसी को डाउट है कि ये क्या लिखा हुआ है, या फिर जिसको इतना एक्सप्रेस ऐप समझ नहीं आया हो? ऑल गुड. ओके. नाउ स्टार्ट में इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ नोड, आई लेट मी यूज़ नोडमोन, ताकि हम लोकली भी देख पाएँ. और या आई कैन यूज़ नोडमोन. लेट मी इंस्टॉल दैट नोडमोन. नोडमोन इज जस्ट अ टूल. जब भी यहाँ पे आप कुछ काम करते हो, उसको सेव करते हो, तो वो सर्वर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है. दैट्स जस्ट फॉर कन्वीनियंस. एंड नोडमोन शुड जनरली बी अ डेव डिपेंडेंसी. मैंने जल्दबाजी में नॉर्मल डिपेंडेंसी कर दी. एंड देन इट शुड बी इंस्टेड ऑफ सोर्स इंडेक्स, इट शुड बी सोर्स स्लैश सर्वर. तो अगर मैं लोकली डेवलपमेंट देखूँ, तो आई डू npm स्टार्ट, इट से सर्वर लिसनिंग, एंड आई गो टू. सो अभी ये लोकल डेवलपमेंट हो रही है. हम देख रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे नहीं कर रहे. सो जस्ट गो टू लोकल होस्ट एंड देन 8080. सो दिस इज राउट नॉट फाउंड बिकॉज ये राउट ऑफकोर्स हमने डिफाइन नहीं किया है. देन गो टू हेलो भी हमने डिफाइन नहीं किया है. उसके बाद हमने वर्ल्ड डिफाइन किया था. Oh sorry, it should be API. Yeah, it should be API. Thanks.
So /API/hello/world, तो hello world आया, and if I try to write again, let's say blah blah, and it should say hello blah blah because वो second वाला route था, right? This route. So this is working fine, हमने locally test कर लिया. Now we want to deploy this API on Lambda, क्योंकि हमें upload करते हैं. तो उसके लिए there is just one extra file you need to create. Let's call, इसलिए मैंने इस वाली को सर्वर बोला था. हम लोग डेवलपमेंट में we actually have a server. I want to call this serverless because this is going to be on a Lambda function which is serverless. So we need a package called serverless HTTP. What this package do is जब Lambda में हम नोटिस किया होगा, हमारे पास ना इवेंट बेस होता है ये काम. We get a event and then we do based on that. But Express API में we don't have events. We actually write routes. तो ये जो इवेंट और राउट्स की मैपिंग है, ये चीज़ कन्वीनियंटली करने के लिए वी यूज़ दिस पैकेज. इट कैन डू इट फॉर यू. इट कैन कन्वर्ट योर एक्सप्रेस ऐप इनटू अ लैम्डा फंक्शन which will behave exactly as if it is a Express API. So that's why we need this package. So I'm gonna copy this, and it's very simple 2-line thing, or just actually 3-line thing. So just call it serverless, require it, and then handler serverless app. Let me import app. So ये express app है, इसको बस मैंने serverless के अंदर कॉल फंक्शन को पास कर दिया, and then what it gives me back is this handler, is basically this serverless handler which is the function itself, जो हम यहाँ पे करते थे. What we have this handler, right? This is exactly what it is now, and now you can export it. Module.exports, and that's it. Now we will package it and then we will deploy it. So let's do that. So /deploy.sh. अभी ऑलमोस्ट 2 MB का है अपर बाउंड. सो बिकॉज हमने एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज भी ले आए हैं, तो जैसे जैसे डिपेंडेंसी ऐड करते जाओगे आपको यू ऑब्वियसली नो कि पैकेज का साइज बढ़ता जाएगा. सो लेट्स गो एंड लेट्स क्लोज दिस. Go to tutorial, upload, zip, package, zip, save. Oh, I think, oh sorry, गलत upload कर दिया, my bad. Should not be this, it should be Lambda API package. You see 1.4 MB ये वाला है. So yeah, this much is done, and you can see source code भी आ गया. Now if I go here and try to refresh, let's see what happens. You got internal server error. Now why did you get it? देखो यहाँ पे दो रीज़न है. फर्स्ट, बिकॉज हमने अब हमारा जो एक्चुअल हैंडलर है, दिस इज़ नॉट इन index.js नाउ. यहाँ पर हमारा index.js के अंदर था, बट यहाँ पे हमारा हैंडलर serverless.js के अंदर है. सो अगेन जो हमने सेम चेंज किया था, राइट, यहाँ पे हैंडलर में जाके वी जस्ट नीड टू एडिट इट, कॉल इट serverless.handler. दैट्स इट. दैट इज़ वन चेंज. So let's save that first. Let's see if it works. If not, then we'll see if we need the second change. CloudWatch में हटा देता हूँ. So it worked. So it said route not found because well, there's no /tutorial out here. Now what I need is /API/ what was it, hello, yeah, hello and then world. But अगर मैं यहाँ गया तो you say it said message not found. It is not coming from Lambda because API गेटवे, अभी तक हमने API गेटवे में कुछ भी सेटिंग नहीं की थी, कुछ भी चेंज नहीं किया था. तो API गेटवे बाय डिफ़ॉल्ट ओनली राउट दिस रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल टू लैम्डा. तो लैम्डा को सिर्फ इतना ये चीज़ हैंडल करने को मिल रहा है. बट आई वांट कि इसके बाद कुछ भी हो वो सब लैम्डा को दे दो. लेट लैम्डा डू द हैंडलिंग ताकि एक्सप्रेस इस राउट को हैंडल कर पाए. आई डोंट वांट द API gateway to handle it. I want the Lambda to handle it. तो उसके लिए you just go to API gateway, go to routes. So you see यहाँ पे एक tutorial लिखा हुआ है. In fact, if you go to integrations, so you will see /tutorial पे कुछ भी हो, any means get, post,
patch whatever type of request it is, it will go to this lambda function जो यहाँ पे tutorial lambda function का नाम है. तो ये mapping हमने यहाँ पे ली है. But I want कि instead of this, first I will detach this integration. I will attach it again in a second. What I want is, I want to edit this first. Instead of tutorial, it should be API because हम /API पे map करते हैं. So that's first change. So अगर /API होगा तो it will let lambda handle it. So let's also /API के बाद कुछ भी होगा. For example, यहाँ पे हमारे पास /API है and then /hello है then /world है. तो I don't care /API के बाद कुछ भी हो. What I care is /API के बाद कुछ भी हो, एक्सप्रेस को दे दो. बेसिकली लैम्डा को फॉरवर्ड कर दो एंड लेट लैम्डा हैंडल इट, और बेसिकली Express.js हैंडल इट. तो आई विल क्रिएट अनदर वन, call it /API/ now this format you have to remember, okay? Proxy plus basically /API के बाद कुछ भी हो, just proxy the request to lambda, और basically don't care about whatever it is. So create it. अब ये दोनों आ गए, /API and then /API/proxy. yes, अब इसको हम lambda से अटैच कर देते हैं. So go to integrations, select any, select your lambda function, click attach. That's it. Same for proxy also. ये दो के लिए करना पड़ता है. Select lambda, attach, done. अब if I refresh, then technically it should handle it. So if I refresh, you see hello world. अब ये express की तरफ से response आ रहा है और lambda की तरफ से response आ रहा है. Now let's say if I say जो मैंने वहाँ टेस्ट किया था blah blah. So it says hello blah blah, and if I give it a route which does not exist, which is /API/hello, it will tell me route not found. So you saw कि हमने एक Express API को डिप्लॉय कर दिया लैम्डा फंक्शन पे. नाउ हम यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट भी कर पा रहे हैं यूजिंग आवर लोकल सेटअप, और हम व्हेन वी आर डन, जब हमें लगता है कि हाँ वी आर डन, नाउ लेट्स डिप्लॉय टू AWS फॉर प्रोडक्शन यूज, वी कैन डिप्लॉय इट टू प्रोडक्शन ऑन लैम्डा. सो आई स्टॉप हियर टू सी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है इतने पार्ट में. बट बेसिकली वी हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड अ Express API ऑन AWS लैम्डा. नो क्वेश्चंस? हाँ, दो ही सिनेरियो में क्वेश्चंस नहीं होते हैं, या तो बहुत अच्छा पढ़ा है या कुछ समझ नहीं आया. ये लगता है मैंने कुछ बहुत अच्छा ही समझा दिया. Basically you are creating a custom, let me look at chat for a second. Basically you are creating a custom middleware and using it in parent file. What do you mean? Great session so far. Okay, thank you. Another person is typing. By the way guys, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो म्यूट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं. How long will Express server will run on lambda? That's a great question. So जैसा मैंने बताया था, functions सिर्फ एग्जीक्यूशन के दौरान एक्टिव होते हैं. द मोमेंट एग्जीक्यूशन इज फिनिश्ड, फंक्शन इज फिनिश्ड. तो एक्सप्रेस का जो सर्वर है, अब हमने दो चीज़ों में डिवाइड क्यों किया था यहाँ पे, एक सर्वर में और सर्वरलेस में. सो व्हेन यू से रन, आई एम अज्यूमिंग यू आर आस्किंग हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस सर्वर लिसन. आई एम अज्यूमिंग यू मीन दैट. एंड इट डजंट लिसन लोकली, इट लिसन्स. बट सर्वरलेस में लिसनिंग कोई, इट डजंट लिसन टू एनी पोर्ट, इट लिसन टू अ इवेंट जो कि लैम्डा को मिलता है. सो जो हमने पैकेज यूज़ किया, राइट, ये बस उस मैपिंग को कन्वर्ट करता है. इट काइंड्स ऑफ कन्वर्ट दिस राउट मैपिंग टू अ फंक्शन, बट यहाँ पे कोई लिसनिंग नहीं होती, लिसनिंग टू अ पोर्ट और एनीथिंग लाइक दैट. सो हम ये बस कन्वीनियंट है कि अगर इस राउट पे आए तो हैंडल दैट रिक्वेस्ट. तो अगर जब तक फंक्शन इट विल रन द लॉजिक, जब तक वो है फंक्शन वो एग्जीक्यूट होगा. एज सून एज फंक्शन एग्जिट, बेसिकली योर ऐप इज गॉन. एंड जब नेक्स्ट इवेंट आएगा या नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी तो वो दोबारा से फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो लाइक दैट्स हाउ इट वर्क्स. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Ajay, I have a question. Will the cron job work over here? क्योंकि cron job के लिए तो सर्विस रनिंग चाहिए. तो हाँ, ग्रेट क्वेश्चन. सो क्रॉन जॉब के लिए इस यूज को केस के लिए हैंडल करने के लिए लैम्डा AWS वालों ने क्या किया था, दे इंट्रोड्यूस्ड, और बेसिकली हर क्लाउड प्रोवाइडर जनरली ये करता है, दे इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड बैकग्राउंड फंक्शंस. सो दीज फंक्शंस रन ऑन डिमांड. जैसे ही फंक्शन या तो लिमिट क्रॉस हो गई या फिर इनफैक्ट दे हैव अ हार्ड लिमिट कि 10 मिनट से ज़्यादा यू कैन नॉट इवन पुट, लाइक जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन में दिखाया था, राइट. लेट मी फाइंड दैट. दिस टाइम लिमिट, आई थिंक इफ आई ट्राई टू एडिट इट, इट वोंट लेट मी पास
I don't know, more than, see maximum timeout is 15 seconds. So 15 seconds से ज़्यादा normal function execute ही नहीं होता. ये this is a hard limit. But if 15 you, minutes. yep, it says 15 minutes. But अगर तुम्हें ऐसा कुछ फंक्शन चाहिए जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करता है और लेट्स से इट नीड्स आई डोंट नो मोर देन 15 मिनट्स, तो उसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड, अब हर क्लाउड प्रोवाइडर अलग अलग होता है. एश्योर में होते हैं लाइक मोर और लेस देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बैकग्राउंड फंक्शंस which are used for background processing. Azure में I think they are called something else, long run, but any long running job that you want to execute on serverless functions, you use background function, जो कि concept ditto same है, कुछ change नहीं है except इनकी time limit ज़्यादा होती है. So इन पे more or less I'm not sure इन पे कोई hard limit भी होती है, but maybe होती होगी तो बहुत लंबी होती होगी, maybe a day or 7 days or something like that. No, But cron jobs के लिए you use these. So as a general question, like cron job, when I say that I want something to execute daily at 9 p.m. something like that. तो लेट्स से आई वांट टू ऑटोमेट अ थिंग कि हाँ रोज़ ये 9 बजे ये फंक्शन खुद से एग्जीक्यूट हो जाए, तो आई थिंक उसके लिए बैकग्राउंड फंक्शन पे जाना पड़ेगा क्योंकि दैट इज नॉट उसके लिए आई वुड से देयर आर अदर सर्विसेज, बट व्हाट दे ऑफर इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं गूगल क्लाउड का एग्जांपल लेता हूँ बिकॉज आई हैव डन इट देयर, बट दे हैव इज अ सर्विस कॉल्ड क्लाउड शेड्यूलर. एंड क्लाउड शेड्यूलर पता है क्या करता है? सिर्फ इतना काम करता है, इट मेक्स अ एचटीटीपी कॉल टू लैम्डा एंड डिफाइंड ऑन शेड्यूल. इफ यू से कि हर 9 बजे ये काम करना है, तो ये 9 बजे बस एक एचटीटीपी कॉल भेजेगा फंक्शन को, एंड फंक्शन विल बेसिकली एग्जीक्यूट एट 9 AM और 9 PM. सो दैट्स हाउ दे अचीव इट. ओके, सो ऐसा कोई सर्विस AWS के अंदर नहीं है अभी? आई एम श्योर दे हैव इट. लाइक लेट मी सी क्लाउड शेड्यूलर ऑन AWS. We can use a event bridge rule. देखो job because Google Cloud पे I've used it, so I know for sure. Maybe, but I'm not sure AWS पे they have something. Cloud जॉब स्केड्यूलिंग वही है ऊपर में, वही होगा ना ऊपर भी? मुझे ये लग रहा है कि ये हो सकती है. हाँ ये बैच शेड्यूलर. हाँ कुड बी, या बट या जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी. It has job queues और ये सब. So yeah, that's how like अगर दो केस है. अगर if you want to run something like a cron job, तो cron job की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डिफाइन करो. बट अगर तुम्हें पता है फंक्शन 15 मिनट से ज़्यादा लेगा, लाइक इट्स अ लॉन्ग रनिंग प्रोसेस, तो यूज़ बैकग्राउंड फंक्शन जो कि एग्जीक्यूट होते रह सकते हैं, उनमें ये लिमिट नहीं होती. एक्चुअली वो जॉब शेड्यूलिंग सर्विस थोड़ा अलग है. वो है काइंड ऑफ लाइक RabbitMQ, जो मतलब जॉब शेड्यूल कर दिया और फिर वो एग्जीक्यूट हो रहा है. बट हाँ वैसा सर्विस होगा ही काइंड ऑफ. आई एम श्योर दे विल हैव इट. आई फॉर यू ऑफलाइन अगर इफ यू वांट टू यूज इट. बट बेसिकली डिफाइन शेड्यूल हियर. बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर 15 मिनट के अंदर है, यूज दिस. इट्स अ लॉन्ग रनिंग जॉब, यूज दिस. वन मोर क्वेश्चन आई हैव, प्रॉब्लम पता नहीं. आई होप ऑक्सर तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट? हाउ लॉन्ग एक्सप्रेस. इफ नॉट देन लेट मी नो. हाँ लोग कुछ कह रहा था. हाँ ओके, पहले मोहित का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. We can use a event bridge rule in AWS to run the Lambda at a particular time of day. I don't know, मैंने event bridge rule use नहीं किया, but yeah, that's a good suggestion. Could be a silly question अजय. The thing is जो यहाँ पे slash API define कर रहे हैं, we have defined that too in the Express app too. Yes. तो ये slash API वो वाला है या फिर AWS का slash API जब हम लोग route mapping कर रहे हैं तो? So what happens is, let me see. So इतना part जो है ना, if I write this much, ये पहले API गेटवे के पास जाएगा, बिकॉज वो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है स्लैश API. और इसके आगे अगर आगे कुछ भी है तो वो भी पहले AWS API के पास जाएगा. नाउ लेट्स से मैंने इतना टाइप किया, दिस विल गो टू AWS API. अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके आगे कुछ भी हो, पास इट टू लैम्डा. नाउ एक्सप्रेस विल सी दिस मच. We go there. Forget हमने क्या यूज किया हुआ है. एक्सप्रेस विल सी दिस मच. अब एक्सप्रेस को ये हैंडल करने के लिए दैट्स व्हाई आई हैड टू राइट इट API. यहाँ पे मुझे सिर्फ इसलिए लिखना पड़ा बिकॉज मेरा राउट ऐसा आता है. हाँ अगर यहाँ V1 लिखा होता ना तो राउट क्या आता, लाइक एक्सप्रेस को जो दिखता बेसिकली वो ये दिखता, तो यू वुड हैव टू हैंडल इट हियर एज वेल. फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे API नाम लिखा और यहाँ भी API नाम लिखा बिकॉज मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था. बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ये चीज़ अगर तुम्हें डिफरेंट मैपिंग चाहिए होती है
then that's where you, for example, जैसे Dev11 में क्या है ना, we have same API gateway, एक ही API gateway पे we have 3 mapping, Dev API, Stage API and a normal API which is our prod API. तो हमें वो तीनों एक्सप्रेस में हैंडल करने पड़ता है. Cool. ऑलराइट, किसी और को कोई क्वेश्चन या फिर लेट्स गो बैक टू एक्सेल ड्रॉ. लेट मी डिलीट दिस. सो हम लोगों ने एक्सप्रेस एपीआई भी डिप्लॉय कर दी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पीस, जो कि बस थोड़ा बहुत जनरल लैम्डा के कॉन्सेप्ट्स है, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हेन यू वर्क विद लैम्डा फंक्शंस. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. ओके, लेट्स से हमारे पास एक्सप्रेस एपीआई है, और एक्सप्रेस एपीआई में कभी कभार लोग क्या करते हैं ना, दे डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल्स फॉर सम एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से सम टाइम पीपल डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल्स. और लेट्स से यू वांट टू यूज़ कैशिंग and you are using in memory caching, you don't use Redis, and for some reason you define, let's say, in memory hash map, or let me do it on hello route. यहाँ पे कर लेते हैं. let's say आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कैश, I'll write it as like ये ग्लोबल वेरिएबल है, और I will say, what should I say, yeah, let's say some random number, again just for example random number, and let's say its value is math.random. Instead of cache, let me call it global variable. Simplicity. Let's see ये global variable है. So ये create होगा जब app चलेगा, and it will never change, right? Unless you change it explicitly. But for this it will never change. And let's say मैं यहाँ पे return करा देता हूँ इसको ना. Let's say if it is this, then global variable dot random number. ठीक है. Now let me deploy this code. Sorry, package this first. And कोई error तो नहीं है ना? It seems fine. And let's deploy this code. Functions. First, I'll show you the issue, and then I'll tell you कि क्यों issue. And this will also bring another topic कि lambda function का वो कोल्ड स्टार्ट और वार्म जब कब तक लैम्डा फंक्शन वार्म रहते हैं बेसिकली, या मेमोरी में रहते हैं, विल आल्सो टॉक अबाउट दैट. सो लेट मी वेरीफाई कि वो कोड है यहाँ पे. इट इज़ देयर. सो इफ आई गो टू /hello and then /world, what should we see? So we see random number 0.673 something something. If I refresh, I see the same number. कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? वाई डू आई सी द सेम नंबर? नॉर्मली अगर मैं इस एक्सप्रेस ऐप को लोकली चलाता, लाइक एज एन प्रॉपर एक्सप्रेस ऐप, तो आई शुड गेट द सेम नंबर फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, जब तक सर्वर चल रहा है, जब तक ये नंबर सेम ही मिलने वाला है कांस्टेंट, बिकॉज ये ग्लोबल वेरिएबल है. एक बार इनिशिएट हुआ यहाँ पे, लाइक एक बार असाइन हुआ वैल्यू, और इट विल स्टे द सेम. बट अभी इट विल स्टे द सेम, बट व्हाट हैपेंस इज, ये जो फंक्शंस है, राइट, once they are started, so what happens is, let me start Excel draw. When a request come, तो प्रोसेस क्या होता है, लाइक AWS कैसे लैम्डा फंक्शन को स्टार्ट करता है? इट फाइंड द कोड फर्स्ट. तो आपने सोर्स कोड बेसिकली AWS को दिया, इट फाइंड द कोड इन सिस्टम, इट स्पिन अप अ कंटेनर और फंक्शन कंटेनर, लेट्स कॉल इट. अब कंटेनर क्या, बेसिकली अ कंटेन्ड एनवायरनमेंट जिसके अंदर एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है. दैट्स कंटेनर. यू कैन सी इट एनालॉगस टू अ डॉकर कंटेनर, ऐसा कुछ मान सकते हो, बट इट्स अ फंक्शन कंटेनर. And it has your code and any other dependency like OS, node install, whatever you have, वो सब installed is container के अंदर. Then it pass the event to function जो container के अंदर है. Function exits, अब फंक्शन ने अपना काम किया और फंक्शन एग्जिट कर गया, लाइक रिटर्न स्टेटमेंट आ गई. नाउ ये वाला पार्ट, डिस्ट्रॉय द कंटेनर, ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट इससे पहले क्या होता है कि अब यहाँ पे दो पार्ट है. लेट मी ऑल्सो ड्रॉ इट एंड लेट मी ऑल्सो पुट इट हियर. नाउ दिस मच एंड दिस,
दिस इज कोल्ड स्टार्ट। होता क्या है कि ये वाला पार्ट करने में ना, फाइंड योर कोड एंड स्पिन अप द फंक्शन कंटेनर, इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम। जब ये हो जाता है उसके बाद ही आपका इवेंट फंक्शन का पास होता है, एंड देन ओनली देन इट स्टार्ट टू हैंडल द रिक्वेस्ट। सो इतना पार्ट होने में ना, it takes some amount of time. It could take let me see, maybe even I can find it in logs. If let me see if I can find it in logs for actual timings कि actual कितना टाइम लगता है जब भी फंक्शन स्टार्ट होता है, राइट? It will actually show you something like init or something like that. Let me show in logs, and logs खुल गया, yes. So let's open this. So हर फंक्शन जब भी स्टार्ट होता है, let the logs load. So I'll show you. So you will see it says start request ID, so that's where it started, and then it has end request ID, and it has report. So it says build duration, and then memory and max memory and duration. So this is the duration जितने टाइम में हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, यानी जो एग्जीक्यूशन टाइम है, राइट? दिस इज ड्यूरेशन. सो let's say this is 1.82 मिलीसेकंड, एंड दिस इज ओनली फॉर वन इन्वोकेशन. ये हर इन्वोकेशन पे चेंज हो सकता है. सम इन्वोकेशन कैन टेक मोर टाइम देन अदर्स, एंड ये आपके फंक्शन के लॉजिक पे भी डिपेंड करता है. हमारा लॉजिक बस क्या है कि एक सिंपल रैंडम नंबर जनरेट रिटर्न कर रहा है, सो इट टेक्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम. बट इफ इट इज कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस, डूइंग इंसर्ट और क्वेरी और एनीथिंग लाइक दैट, वो सब काउंट होता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम में, एंड यू आर बिल्ड फॉर एग्जीक्यूशन टाइम ओनली. एंड ये राउंड ऑफ होता है टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो अगर 1.82 है तो आपको 2 मिली सेकेंड का यू विल बी बिल्ड फॉर इट, इतना आपको कॉस्ट आएगा. एंड देन let me see if I can find init duration. There is also something called init duration, अगर मिल जाए तो. some you can see some duration कुछ ज़्यादा ही होते हैं. see init duration, yes, ये रहा इनिट ड्यूरेशन 258 मिली सेकेंड. सो यू सी जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन टाइम है ना, उससे भी ज़्यादा इनिट ड्यूरेशन में लगता है. तो ये है एक्चुअली कोल्ड स्टार्ट. तो ये वाला पार्ट करने में दे टेक सम टाइम फॉर फंक्शन टू क्रिएट द इन्वायरमेंट, और ये कोल्ड स्टार्ट होता है. जितना ज़्यादा फंक्शन हैवी होगा, जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसीज होंगी, उतना ही ज़्यादा कोल्ड स्टार्ट होगा फंक्शन में, बिकॉज उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा कंटेनर सेटअप करने में. तो दैट्स वाई इट इज़ एडवाइजेबल कि अपने फंक्शन कोड को छोटा से छोटा रखो. डिफरेंट अलग अलग फंक्शन बना लो, बट एक फंक्शन के कोड को ट्राई करो टू कीप इट एज रेलेवेंट एज इट इज़ टू द बिजनेस लॉजिक. एक्स्ट्रा चीज़ें मत डालो, एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी मत डालो, अदरवाइज कोल्ड स्टार्ट बढ़ता है, और जितना कोल्ड स्टार्ट बढ़ेगा उतना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा, ऑफ कोर्स, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज आफ्टर इट इज स्टार्टेड, ये फंक्शन एग्जिट होने के बाद कंटेनर इमीडिएटली डिस्ट्रॉय नहीं होता. अगर फंक्शन पे, क्योंकि दिस इज यूजेबल, अगर एक बार कोल्ड स्टार्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर हम तभी डिस्ट्रॉय कर देंगे कंटेनर को, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे फिर से कोल्ड स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे फिर से होगा. तो टू ऑप्टिमाइज फॉर दैट हम क्या करते हैं, AWS क्या करता है, इट कीप्स द सेम कंटेनर इन मेमोरी फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम. अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल टाइम दे रहा हूँ. इट इज समथिंग इन द रेंज ऑफ 10 to 15 मिनट्स और 10 to 12 मिनट्स. अगर फंक्शन में 10 से 12 मिनट तक कोई भी नया इवेंट या नई रिक्वेस्ट नहीं आई, दैट मीन्स इट इज़ आइडल फॉर 10 to 12 मिनट्स, देन इट विल डिस्ट्रॉय द कंटेनर, और नेक्स्ट टाइम कोल्ड स्टार्ट होगी. बट अगर इस ड्यूरेशन से पहले ही दूसरी रिक्वेस्ट आ गई, तो इट विल रीयूज द सेम फंक्शन, या बेसिकली रीयूज द सेम कंटेनर, एंड उसी के अंदर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो वो बेसिकली वार्म स्टार्ट होती है. जहाँ पे कोल्ड स्टार्ट नहीं होती, जब फंक्शन डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होता है तो वो वार्म स्टार्ट होती है, बिकॉज द फंक्शन इज ऑलरेडी वार्म, इट हैज़ नॉट गॉन कोल्ड. तो ये कोल्ड और वार्म में डिफरेंस है. एंड ये वाला आइडियल टाइम है. व्हाट हैपन्स कि अगर ग्लोबल वेरिएबल आपने डिफाइन किया, और ग्लोबल वेरिएबल में यू आर रिलाइंग ऑन सम डेटा, तो ये फंक्शन 10 से 15 मिनट में, इफ इट वाज अ सर्वर, तो वो जब तक सर्वर रनिंग है तब तक द ग्लोबल वेरिएबल वुड बी प्रेजेंट, द डेटा इन इट विल बी प्रेजेंट, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा. तो यू वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट द सेम नंबर. बट बिकॉज यहाँ 10 से 12 मिनट बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, नेक्स्ट टाइम इट स्टार्ट्स, तो वो ग्लोबल वेरिएबल भी दोबारा, उसका जो अंदर कोड है वो भी दोबारा एग्जीक्यूट होता है, एंड वो चेंज हो सकता है. सो दैट्स वाई अगर ये आइडियल होगा 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको छोड़ दिया, या फिर इवन आई कैन ट्राई दैट मे बी इट हैज गॉन कोल्ड. इफ आई डोंट गेट द सेम रैंडम नंबर, दैट मीन्स दोबारा से कोल्ड स्टार्ट हुआ है. यू सी, मुझे
random number different मिला. That means the function, that container was destroyed and function दोबारा से cold start हुआ है. But if I try to refresh now, you see I'm getting the same number because अब warm start हुआ है. So that's basically cold start and warm start, and that's why you should not be relying on global variables or global caching basically, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकती है. एक सर्वर में इट कैन स्टे टू इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम जब तक सर्वर रनिंग है, बट फंक्शंस में इट इज़ एडवाइजेबल टू नॉट डू दैट. यू कैन डू इट, बट एटलीस्ट वो डेटा रखना जिसपे यू शुड नॉट बी रिलाइंग ऑन, जो कि अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए या फंक्शन रीस्टार्ट भी हो जाए, then it will not harm your business logic. You don't care about it. सिर्फ वही data you should be keeping there. So yeah, that's about caching, global variables, and cold start. And to optimize cold start, keep your function as relevant as to the business logic as possible. Use less dependencies. और अगर if you can split your function into multiple functions, do that. फंक्शन लॉजिक को डिफरेंशिएट करके दो फंक्शन बना लो और आधा लॉजिक उस पर रखो, आधा लॉजिक उस पर रखो. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से अभी तो हमारे पास सिर्फ एक राउटर, राइट, हेलो राउटर. यू कैन हैव लाइक माइक्रो सर्विसेज, आई होप सबने सुना होगा. तो यू कैन हैव वन फंक्शन पर माइक्रो सर्विस, वो भी यू कैन अचीव. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन अचीव विद फंक्शंस एंड यू कैन स्प्लिट बेस्ड ऑन दैट लॉजिक. सो कोई है जिसको इतना ये पार्ट जो मैंने अब एक्सप्लेन किया, कोल्ड स्टार्ट, ग्लोबल वेरिएबल्स, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू नॉट डू, ये बात समझना है.